हम्म, हेलो गाइस। स्वागत है आपका इस बोरिंग स्ट्रीम में। सो हम लोग कल देख रहे थे ये वाला जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये पाथ वाला, ठीक है, नेविगेशन का। तो अब हम लोग स्विच हो रहे थे कोडिंग पे। कोडिंग में हम लोग को इश्यू आ रहा था कि जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम लोग को कैसे लेना है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? Are you guys seeing the just a minute, मेरे को लग रहा है ओके दिख रहा है ना? बराबर, बढ़िया। सो हम लोग ये चेक करने वाले थे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग का ये फेल जा रहा था बिकॉज सिंगल कोट वो नहीं कर पा रहा था। फिर वाइट स्पेस का इश्यू हो रहा था। तो सो नाउ व्हाट हैपन इज let's say what we do is if there is uh, empty string empty single quote. So what we do, we replace it by space, and we then trim it by then what I am bucketing. So will it work or not? World hello. How the thing is working here, I am not understanding. The sales script, expected sales script is okay. Let me check again. Sale word is okay. This is okay. This is also okay. Test script is okay. Now the problem is this space. Let's say final value dot. What happened now? If we do this, I don't understand this concept. There is a space in this, so why this is not working?
Here it sound like the space should removed from between, right? Then this is the right way. Split white space and done. But why it's not working? Here failed the test case because the space was removed. I let me read the okay consecutive white space. Consecutive white space. If it is a single white space, then it's okay. If it is consecutive, then it's not okay. So, so what we do is here, what we can do, uh, split white space collect, right? Printable statement. We have to iterate over this. Consecutive space should be remain, right? Consecutive space should be there. One thing we can do, what we can do is if it is a double space, no, that is something illogical thing. Or say it is a complex, then we can do in a different way, better way, efficient way. But what is that way? How we can do? Is there any way you can think, bro? There is one more question because if we see like in a hello world example where the word has a one space, character has a one space in between, it combined the space, I mean remove the space from it, then how we will decide that this space should be removed or this not? There is a question here, how we can decide.
form a single argument. Concatenate. Empty quotes are gone. That is fine. Quarter string placed next to each other. That is fine. The space inside a single quote are preserved and are not collapsed or used as a delimiters. Okay, that is also fine. Character inside single quote, including escape character and potential special character, lose their special meaning and are treated as a normal character. That also fine. That I don't want. I want that. What is the issue with the? Let me check first. What was the single quote? Okay, let me search for a single quote. See this. That's not understanding for me. World example, world example. Consecutive space are collapsed unless quoted.
One minute. I need to read the instruction. Can't. Hello world. Okay, if the uh, command, argument is not quoted, then it should preserve the space. If it's okay, I understand something, but not fully. Guys, sorry, just I'm. I am back, guys. Sorry. Mm. So, what we do? Yeah, I was here understanding the text because I think I misunderstand the topic actually properly. I didn't understand the instruction. So, why our test case is failing? Because we have to implement and check these both conditions. Spaces are preserved within quotes, so we have to check the quote also that it is must start with the quote and end with the quote, single quote. It didn't define that it um, should work with the double quote or not. But I think double quote is here, so maybe uh, we have to do with for the both. So what we do, I think, that's a problem.
we have to check this also. So we can't blindly replace the all single quote. We have to preserve this also. So we have to manage it properly. Mm. Hey guys, we are doing fucking stupid things here. If you are not interested to do this fucking shit, then go learn something better. I doing fucking nonsense in here. Mm, it will be better to do live stream of games. But I am doing for learning, for my learning, so I have to continue. I need to improve my skills. So where are we? Yeah, we have to handle this echo. Uh, so then what we will do is arguments. Yes, come on. Why the S is here? Are using S anyway. Uh, I think we are using split of a length of a word. Splitted CMD widespread. Okay, we did what we did was split it with a white space and then get an argument. So why the fuck we did this? I didn't remember why we did this. That's the question. I don't remember why we did this. Uh, are we needed it? Maybe or maybe not. I don't think we need this. Or we need this. Let me check what is this actually print. I don't remember. That's how my mind works. I forgot everything which I done exactly in a week or it's doesn't happen in a week also. I forgot already. Wow. How can I remember all things? Stupid brain, my stupid brain. Uh, need to do anyway. For you guys, if you don't understand, I I am doing in a WSL webs Windows subsystem for Linux. So what we do is I'll run cargo and what we do is what we do echoing. Let's go with echoing. Hello world. Okay. I understand now. I understand now. I understand now. We are using these as a full string, not as a splitted value.
So let's without splitted arguments. Okay, so we do what we do is without splitted argument, but I don't need this anyway. I have to create the function. We are using anything here? No. So we can't. What to do is let me creating a function for handling this function. Handle handle um, echoing echo handle echo. Okay, let's go with echo. And what we do is what we do, we pass this without split argument in this. Mm, what we do, echo handle echo, and what we do, we pass this. Then what we do, go here and let me give args string. Okay, it's done already. So now we have to handle echo. So what we do is if as we saw in the answer, you guys already going right. It's a boring thing. Args dot uh, no, not like this. We have to check the first value is a character or not. What we are doing here, let me check first. We didn't check it is a starting from split a quadrant. So what string provide me first? Provide first? No, nth dot end with is that start with. Yeah, there is a start with. So we can use this if this is a start with what we say this slash uh, character like this. How I was written this, I don't remember. Will it okay? Yeah, it okay. If you start with this, then this, else if args dot start with no, we also have to check and end with. One minute. What happen if the argument start with the this sign and then doesn't end with the this sign? Should we consider it or not? Hmm, that's I have a doubt. Should we remove that only, or we have to preserve the values? Hmm, anyone did this before?
Can you guys know? Let me know what it happen. What will happen? It's only 30 minutes of stream and we didn't progress anything. Um, what we can do? What we can do? What we can do? Um, let's go with the first start with. Then we, if the our test case is failing, then we think about the other thing. Okay. So let's go. If it start with this and else, that's it. That's what we got. Now, if the argument start with this double slash, then should we consider the inner? It said consecutive space, right? Space are preserved within quotes. Okay, that's okay. And if consecutive space are collapsed unless quoted, that's that is okay. We have to collapse the spaces, right? Consecutive spaces are collapsed unless quoted. Only consecutive spaces. So how much spaces is there? Mm, we have to preserve when the spaces are preserved in code. Okay, what we do is first let me check if it working or not. First, let me print only, and what we do is just let me replacing the args dot replace from slash dot to empty. Okay, just to do this and let me print it. If it working or not, I don't know, but let's check. Let me check. Uh, if you don't understand my English, so sorry for that because I am fucking doing nonsense here. You don't have to give too much time for me. You are okay with that. That's some stupid person doing live stream for himself. Why this fucking not working? What is the issue? Cannot value as ah yeah right. Moment. 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 Nice. Now it's well. Yeah, it is fine. Let's go. Yeah, it compiled successfully. So let's me uh, run test cases first. Then we do something. Then need to comment. This is the comment. Let me just a minute. Just git. Just a minute. Just a minute. Paste. Yeah, paste. What the hell?
uh, ignore. What? नहीं भाई, मैंने आज भी लेट नहीं लगाया है, ये मेरे को पसंद है ये वाला थीम। This theme is a jellyfish theme. If you guys interested in downloading the theme, this is the theme jellyfish. And for background, what I do is there is an extension called background. Yeah, this one. This is the background I am using. Background is from downloaded from internet. You can go with anyone, any images you want, and change the opacity according to it. This is actually my wallpaper also. Sorry, which screen you are seeing currently? I don't know. Uh, so that's two extension I am using for now for my theme. You can go check, and also I use this for theme. That's just a personal choice. If you want, you can buy. And anyway, the code editor will be the personal choice for anyone. Some some like the other themes also, some like white light theme. So it's totally personal opinion and personal choice. So where are we? Yeah, that's the question. What it's saying that oh, 1 minute, echo test script. Why this not worked? Why it did not working? Let me check. Print ln. Um, Let me print arguments first. Uh, args. The thing is working or not first. Let me check. Uh, Echo. Hello. Okay. Uh, that is okay, but why my maybe I know. Just a minute. Maybe I know why this is happening. So I need to do what I need to do is um just a minute. I split it off but didn't trim it out. So I need to trim it. What if I do here also? Will it work? Yeah. No, not work. What it's saying. That's fine. What? Just a minute. Let me go with. I don't need to do it trim here. We will do here. Um, so what we do? Let me. This how much I variable I created. I don't know, and I don't know what name should I given as of now. Just giving anything for now.
So just ignore it for I don't need the print statement now, as it will create the issue with the test cases. I yeah, I am not creating the project, bro. Let me share you. Uh, are you guys seeing a browser? Yeah, okay. So what I am doing is creating my own sale um, by the Code Crafter challenge. Code Crafter give you the different type of challenges which you can work and create your own system like sale, redis, interpreter, grep. But for me, this is a free challenge for now, is in December, so I am doing this. Um, else if you want to do other things, so you have to upgrade, but this is very costly. As a Indian person, or as in India, it is so much price for this. As you can check, if we count as a dollar rate in let's say 100, then this will be the 6,000 rupees for a 3 month and 74,000 for a lifetime. And for a year also it will cost around 18,000 rupees. So it is costly, so we can't go with that. We are doing free challenges only. And why this I am doing? Because I want to do a project type of work. So actually what happened is I quickly quit anything if there is a confusion in it. So what I did live stream. So I don't have an option to quit. I have to complete this series in a live, and also in a Rust, because I want to learn a Rust. I already a developer, so I know in a JavaScript, and it is easy in a JavaScript compared to Rust. So I don't know about Rust. I mean, I don't know about syntax and all. I want to learn that. So for that, it is a better to do with the challenge. So you gonna know how it will be implemented in your project. And for learning Rust, you can go with the documentation of a Rust book. This is a good the documentation provided by Rust is very good. Um, but for better understanding, it's better to create a project or something like that. And taking the challenge is a way to improve yourself. That's why I am doing. You can do by your own. You can go and start take a challenge in your language. This support many language, whichever you feel this is okay for you, like a C, C++, JavaScript, TypeScript, Elixir, Java, Go, PHP, anything you want. If you feel good with it, then go start. That's it. I'm going again in my CTS project. Uh, so what we do is let now it should work properly. Maybe let me check.
You can also see me as doing mistakes also. uh, you can call it out, or anything you feel, but I will learn anyway, because I have to learn. What I am saying, I don't know. Anything I have in mind, I totally speak it out. So what was I doing? Let me check it will work or not. CD, I don't have to do CD. What I did. 1 minute. Why CD is not working? It should work, na? Let me check PWD. Okay, it's not working. So it should give me the error, no? Why it not giving me the error? Yeah, it giving me error. So why this is not working? That should be work. Let me check what is happening. Let me say the first character match. Okay, we didn't first character last. Okay. We didn't handle the scenario when anything not match. So what we do? Just a minute. If anything not match, right? What if the character is like CD and Minecraft? Let's say. So it should work, na? Interestingly, the test case, there is a no test case to check this. I think there is no test case for this. Why? It should have a handle for this scenario. Mm, let we solve it. What we have to do is we have to check the character is ASCII value. How we check? Is ASCII, is there anything we have to do? Character is ASCII or not? Let's go with the default value. In default value, we check first character is ASCII, not ASCII, ASCII alphabetic. Yeah, it's alphabetic. So if there is a quote, then that is alphabetic or not? Just a minute, I will check in this. Rust is providing me the compiler, right? Let me go introduction, installation, and there is the hello world Rust compiler. Let me check. Rust compiler online Rust compiler. Let me check. Is it just a minute? What uh, what are you saying, bro? I am already said in a stream. I am doing a code crafter challenge. You can check it.
Why the uh, my chat is not live? No problem. Vaibhav, I am doing a code drafter challenge. You can check. You can also try if you want. Here, this is a code crafter website. You can go and check if you find suitable for yourself, anything suitable for yourself or your project. You can try it and try to make it and edit it in GitHub or your resume anyway. It will good for learning and understanding about concept of sale and let's say there is a Redis free challenge, so we know about how Redis work or grep work, interpreter work, like the system, you know how it work internally. So go try yourself. I am doing some just this. If you want to see it, then it's fine. Else you can go and try it yourself. It's a better way to learn and improve your skill. So what was I am doing? What I was doing? What I was doing? Yeah, I have to check that first character is ASCII value or not, right? So I don't know it will work or not. String, let's say string unused variable a. Okay, okay, it's fine. A dot um, is I don't know it is available on a string or not. Is ASCII alphabetic. Let's say is alphabetic now. It's a better. We only have to check is alphabetic. I don't know. It should work or not. Just a minute. Let me check in a real case scenario. Let's say we go in a SRC like this. Will it work? Yeah, it is working. So we have to think about this scenario also. That if it start with and end with a single quote or double quote, let's say it is a single quote also, will it work? It should be work. I maybe I already completed this challenge, but there is a no test case for this. I think that's why my test case is passed already, maybe, but it should be there for checking like this. uh, So first character start with let's say first character is start with sorry, that's not how we do. We have to do like this, and I don't know will it work or not. It should work. Yeah, it work. Not working. So maybe we have to do this. Will it work? No. Then how we give a single quote to this like this? You have to give like this. Will it work? No. How we will give that this is a single character we need to check. Hmm,
I don't know. Uh, no, no, not like this. Uh, bro, I am doing code crafter challenge. Already told in a stream, but let's say again that I am doing this code crafter challenge. This is a thing you can do by yourself also. It's simply what we say is codecrafter.io. You can go here, train your engineering skill. I mean, it create a tools which is already there like Git, Redis, or Sail. You are creating from scratch. You can create anything from here. And current challenge is this: build Sail from scratch. You can start with it, or you can start with anything you want, but currently this is available for free as of now. Others challenge are in a paid, so it's better to go with the free one. uh, what are you guys chatting in a chat stream? This much chat I already happened. That's the highest count for me as of now. Uh, so what you asked, Vaibhav? What I already answered that. Good luck, bro. In what? Thank you. Yeah, something like the terminal, but it is already in terminal. So we only understanding the concept how terminal work behind the scene. Uh, but let complete the challenge first. I don't know how I can complete it. I also don't know if I can complete it or not. It up in a first place. So that's the question. Yeah, I am on Discord, but I am not creating any channel for as of now. I am already a old developer. Who is कौन गाली दे रहा है बे? Oh, he is amazing. Yeah. Okay, okay. No, yesterday I was doing my code, so someone told that you are not showing getting attention on chat. My English is so bad, so don't consider my English as pro. So sorry. Yeah, thank you, bro. I am going again in coding. So continue your chatting. I was I stuck here. What we do? Hmm, it's not matching. So what we do is, if it is not working, then what we have to do is,
what we did for the dot syntax, we did join and all, right? Dot is saying that it is a relative path like this. Let me do one thing. What we do is what happened if, just a minute, let me copy this. I don't know will it work or not. Just let me check if this worked, and then this is a fine. Just a minute. Print ln. Okay, done. And for now this what we do, path buffer is there, and let me semicolon. Here semicolon is important, bro. In a JavaScript, there is a no semicolon needed. You can do, but it's exceptional if you not do. But here you have to do. As a JavaScript developer, you forgot sometime to do semicolon. Uh, path new, it's okay. Yeah, let's check. Let me check what happened if we do like this. For go uh, cargo run cd, and what we do is let's go with this. What happened? Let me check. It didn't print anything because maybe I 1 minute. If path is not doesn't exist, we didn't print a error or anything, right? Yeah, we should print, yeah. What I did, yeah. That's and how much duplication I did. I fucking stupid or what? This is so much duplication right now, isn't it? So much duplication. Uh, let's think about as a later. What was I was doing? This is a fucking stupid thing. And then yeah, let's see if it working or not. CD do. Yeah, so here it is coming. So what is the issue now? What is the path here? Not path, let's say uh, let me go with this. Else again I am doing same. I need to refactor the code later. That's fine for me at that now. Let's go with this working or not. Right, it working. And what happened if we do? Then why I need this so much thing? We can directly pass na current directory dot join. Mm, what happened if we don't do this much shit? Let me go with this formula that we removed all this thing, all this shit, and we do this and
removing this also. Will it work or not? It should work maybe. If not, then there is something wrong in it. First, check what we have to check first. First, home directory. Let's say we check home directory, cd home directory, and what we do. Uh, I need to fix this first. It is not accepted in a test case, but I have to implement it to for me as of now. We will remove it later if we think that this is not necessary as of now. So what we do is printing current directory to understand where are we, right? Yeah. Okay. For you guys, if you don't know that if we do something like this will print a string also, not a display value for a path only. So we have to display it properly. And see here, it is a double quote is coming. So now it will not come. Um yeah, it's done. So one minute, one more thing. We give the space here. So space, not space. Let me check what it is. Just a minute. What it give me? A dollar sign, right? And here it give me the name and path. So that's what we do is that we print dollar last, right? It will be the better idea. Dollar here and then space, right? This will look good. Yeah. Now we check cd dot. Yeah, it is working. And now let's go with AI. Let's say, yeah, it's working. So now uh, let's go with a relative path. Not yeah, let's go on a relative path. What is the I have to print it. Just a minute. What? Fuck. CD. Let's go with a relative path as of now. SRC. Not SRC. Let's go with the target. Target. Debug. Debug is will be good. Let's see. Yeah, it's working. Now let's go with the relative path. cd dot slash double. Now go with in AI. Yeah, it's working. Now what we do? Now we have to check double quoted. So we do check double quoted here, and first let me go back and code crafters cell rust. Okay, this will not work maybe. Let just a minute, let me check here it is working or not in a actual Linux. If you guys don't know, I used Windows subsystem Linux. uh, so here it is not giving me the error, right? Just a minute, cd src and none. This is giving me the error, same error. So our code is right anyway. Bro, XU3 cricket.
Here already the race is ongoing in this field. Here already people struggling as of now. Yeah, you can get the job, but yeah, you can try it if you uh, are good in these skills, or you can grasp the knowledge of this field quickly. Yeah, you can try it. uh, you I think I say you have to try. There is many people who are not in this field, but they are in a good position, and they are doing good, very good. You say that is not about Hindi, bro. I need to improve my English also. That's the reason. I know Hindi, I know Bhojpuri, I know Gujarati, but that is not a thing. For that, there is a different channel, and I am doing this Bakchodi in a different channel. I just learning. Um, this channel is just for learning for myself. That's it. Yeah, I know, bro. I am already a developer. No, bro. I am trying. You can. I understand you are not getting my points sometime, but I have to learn myself also. I have to uh, go in a proper English communication to boost my confidence also. In a corporate job, there is a need of English, and it is better to having a good communication skill in English also. Because in IT field there is a many client in a client of foreign clients there is, so you have to talk in English with them. And what having a problem if we do in English? I'm not saying Hindi is bad or all. I can speak in Hindi in a different channel. There is a channel already, different channel where I speak in Hindi, and that is not a problem. I just trying to improve myself. That's it. I don't know about Java actually. Sorry, bro. Uh, for Java, but there is a much scope in Java. You can there is many company who has a deep background of a Java, like in his server, all companies server are running in a Java, and some legacy code of Java there is. Which company is old, and or it has a strong presence, then it is using Java very much. And there is so much scope in Java as a backend developer. So you can go with it, learn from tutorials or YouTube. YouTube is a great source of knowledge. You can go with it. I already answered that question, bro. Yeah, I using Ubuntu as of now.
There is a Kali Linux, but I use Ubuntu as it is easy as of now. Yeah, foreign. That's the reason we have to speak in English, and it is a better to communicate in with a foreign client. If you understand better and speak better, it is a good thing for you and for your career development. There is nothing wrong in speaking in Hindi also, but this channel is for self development, for my self development. So I am not developer of a backend, bro. I am front end developer, Angular developer. So I just as doing this as a hobby. I like backend. So I done backend in a Nest.js, in a Node.js one. But the thing is, I want to try new language. No, I don't know. Yeah, I tried Python, but I don't like much that because uh, if you coming from a different language, like you coming from a structured language, like you have a basis of you have a syntax which you see where the block is completing or from where block starting, so you have an idea that this is the block. In a Python, I confused in this. Yeah, I know this is a good for AI and all, and I use that also. Yeah, that is not thing like I don't didn't use Python. I am using this for my some of the project like OCR and all, because there is a great source of library available in a Python. So that's why Python can be used for AI machine learning, and uh, already there is much stuff in a Python and great source of library. So yeah, we can use it, but I don't like much as a language. No, what you are saying, you are using default desktop environment of Ubuntu. I don't understand what you are saying, but I just using a command tool WSL. The Windows subsystem Linux provide in a, you can use it. I don't understand the question actually. Yeah, I am front end developer. हम्म, यार तुम लोग के चैट के चक्कर में मैं फिर से वहीं अटक जा रहा हूँ वापस। अ, कहाँ था मैं, कहाँ था? या what was I checking that this is sorry, cargo run, yeah, that is cargo run. And what we are checking that if the user go with the dot slash, and let's say we go want to go in a src, will it work? No, it is not working. That's an issue. That should work. Hmm, what we can do is there is a problem in argument, right? So what happen if we replace the argument where it has a double quote or single quote? Will it be a good idea? Let me try. Let split note. Let's replace this.
Uh, I don't know what I am giving the name, so just ignore. Mm, I am giving anything as of now. What I don't know naming properly. The only naming thing I don't like. So, I hate it giving a name, and that's also a different name, different type of name, and especially if you don't know about your project properly. So what we do, replacing the single quote and double quote from arguments, right? Let's go with the arguments. Sorry, will it work or not work? Maybe it should work. Well, if it not work, then we replace it. Okay. Let's see. This should be work, and let's go with this. Now let's check. Let me check. Mm, so CD, uh, what was the failure of this? Yeah, CD SRC should be work. Uh, 1 minute. How it was to SRC in the first place? No, go SRC. Yeah, it's working now. And for a single quote, it is working or not? It should work, maybe. Yeah, it's working. So our code is working fine as of now, and I don't know about will test case pass now because we can't go back and run test case again. So I don't know uh, if there is a method we can try, but as of now there is no method for this. So let we just do this, and yeah, from where we started is echo, handling echo, and we go here in a path thing. I don't know why and where I did this. So what was I was doing here? So we were handling the echo stuff, right? And we printing the echo here, and 1 minute. There is a we have to remove this as of now, else the code will be failed. Let me remove this. Test case will be failed. And what we do, argument dot trim, and now let's check if it is working or not. It will not work as of now because we didn't handle some more cases. We will handle it, but first let me check if it is working or not. um, that same error should not come. uh, okay, hello world will print, and here it give me a new line. Oh, why new line? Why new line, bro? Still hello. This is okay. And echo hello world.
Why this is not working? Let me check if why this is not working. Let me copy the command and let me paint it. Why it this not work? Oh, sorry, I didn't handle. Ah, that's why I said I am a stupid person. What it expected value is a trimming the spaces. If it is not in a what say we say single quote or double quote. If it is not in that, so we have to trim the all spaces. So what we do is we did it before, but let me go with again. So what we do is uh, B already is there. So let me give me name Z. B dot split white spaces. What split white spaces? Yeah, split white spaces and what we do collect. If you don't know collect is what it do. It vectorize the this, so it is better to handle the operation, different operations as it is converted in vector. Mhm. So this is the vector and it has str maybe. I am right or not? Yeah, it has str. So now what we do, it split white space will remove all extra spaces from um, the values. So we need a dot join and who is this person? Yeah, uh, we join with the space now again. So what it is print? Let me check. Will it print what we expected or not? I hope it will print. Okay, what we have to do is echo. This is the word. I think I did something wrong. Um, is there a display or something? No, it should not print. It should print a quote or not. I don't know. Let let me test in a test case, or then we have idea is it right or not. Bro, शकल अच्छी नहीं है. I don't have a better शकल. You say. Uh, or you can say no better camera. Maybe I already came to the camera before 7 8 years ago. There is a video in this channel, but there in that video also I am very underconfident. I don't know how I started this channel again. No bro, no, I don't want to give. uh, I don't want to give, please, sorry. I fear that
That is not a good idea to you as of now. Uh, I don't know what fucking stupid thing I am doing and on that channel also. So that's why. But why the my yeah, I know. Yeah, we don't have to print this. Then why this is coming? Maybe because we didn't store the value. Um, that's why I hate create variables. This much variable is I don't know. Sometimes I just speak and I don't know what to speak next. So ignore it. CD. What was the command? Echo. Yeah, that is. Yeah, this will work. This will work. This will work. Still, there is a problem. We will solve it later. But let me check it is working or not in the first place. It says consecutive spaces, right? So I think this will fail. I know. What it's saying? What it is saying? The test case is passed for a echo thing, right? Then it goes. Just a minute. What it is testing? Let me unsplit the terminal so I can have a better view of the thing. So what it do is running test cases, exporting the path temp mango raspberry blueberry. Okay, raspberry blueberry, right? No problem. Then mango blueberry pear banana apple temp pf. That's fine. Then what is the problem here? Cat temp. 1 minute. There is a problem in a command execution. There is a problem in my command execution. Maybe I did wrong. What I did wrong, but here executing the command. Executing the command. I have to check this again properly. The problem is here. I think now it doesn't have a problem here. So now we have to check this. There is a problem in this context, this function. So we have to check. What we do is first let me print out the argument. What is it giving as an input? Let me check first. Um, Here, this is the command, right? Let me check and what happened. But wait a minute, there is the problem because no, I don't think there should be a problem. Let me check now. If there is error, then fine. So no such a file directory available. But wait a minute.
Setup temp B. It is setuping, no? Then why it's not working? Where are we doing wrong? Is it really in the execution phase? Uh, mm, let's go with again. Our echo echo one is the right thing. Echo is printing properly all the same, but here it has a problem. In a temp BEF, I think this is a file name. Maybe I don't know about a cat. Let me first understand this command properly. So we go in a browser and let me paste this. What it do? The command cat is a standard Unix command used concatenate and display the content of the specified file. And what is the number mean? The cat command take content of the three files F46, 52 and 3. So and then output them sequentially to the standard output, typically your terminal screen. Okay, it is a printing. So 46 will be the line number. I have to understand now again. Is a standard Unix Linux command used to concatenate and display the content of the specified files. The cat command take the content of the three files and output them subsequently to the standard output. If any file does not exist, you do not have a permission to read them, then the cat command will output an error message, but continue to read the other files in temp directory. Okay, so it have to work properly. इतना फिर से चैट हो गया क्या? इट्स ओके मे बी बाय द वे भाई आपने हिंदी में या थैंक यू ब्रो बाय या DSA is required bro uh, that's a fine if you don't know DSA but it is a good point to know because if you think that अगर तुम जानते हो ना DSA की सिर्फ जॉब के लिए नहीं एक्चुअली जॉब पाने के लिए खाली ही नहीं करना है डीएसए एक्चुअली इसलिए करना है कि तुमको नॉलेज हो पाए प्रोग्राम को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ बिकॉज कभी कभी क्या होता है हम लोग को भी इतना प्रॉपर डीएसए नहीं आता तो काफी प्रॉब्लम होती है मेरे को वापस से जाना पड़ता है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि क्या क्या था ये प्रोग्राम में कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे कि तुम मान लो कोई प्रोग्राम है जिसमें या गेमिंग डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट में ही कभी कभी कुछ चीजें होती है जहाँ पे हम लोग को जो ए स्टार एल्गोरिदम है ये सब है वो सब का जरूरत पड़ता है या सॉर्टिंग का भी जरूरत पड़ता है तो एफिशिएंट वे क्या है वो पता होना चाहिए सो इट इज बेटर टू नो डीएसए that is not only a thing you have to do for a placement but it is uh, not only for a placement but for a job perspective or your learning purpose so डीएसए कर लो थोड़ा बहुत ही तो थोड़ा बहुत ही सही पर डीएसए कर लो बट वो एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है तुम्हारा डीएसए ओनली क्राइटेरिया नहीं है तुम दूसरा भी तुमको अगर बेटर आता है सब कुछ और तुम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो प्रोग्राम तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो अपना कोई भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो
सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसको एक एक चीज तुम अंडरस्टैंड कर लो, एक एक चीज है तुम बता पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका है जॉब में, because you know understand your component better, you know what you did, what challenges you faced during the development of that project, so you can better explain and your solution what you did for that overcome that problem, you can better explain, and इंटरव्यूअर को भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको आता है कुछ, और तुम अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हो बेटरली। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, डीएसए खाली डीएसए जरूरी है पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्लेसमेंट के लिए। वो एज अ तुम आगे बढ़ते हो जॉब में तब जरूरत पड़ता है, वो काफी जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत पड़ता है, बहुत जरूरत पड़ता है। और मैथ अ, लोग कहते हैं ना मैथमेटिक्स और डीएसए जरूरी नहीं है आगे, वो बहुत जरूरी है, और खासकर प्रोग्रामिंग में बहुत जरूरी है। ऐसे सिंपल प्रोग्राम करना हो तो चलेगा भाई, सिंपल सी एस एस सी एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट करना है वो चलेगा, पर जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं ना, तो वहां पे तुमको मैथमेटिक्स भी चाहिए, डीएसए भी चाहिए, और कभी कभी तो साइंस और फिजिक्स का जो नॉलेज है वो भी कभी कभी चाहिए होता है, नॉट हाई लेवल बट थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी नॉलेज कभी कभी चाहिए होता है, अगर तुम ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे इसका जरूरत है, जैसे कि थ्री डी मॉडलिंग और ये सब जो है थ्री डी मॉडलिंग, और या फिर तुम पीडीएफ में काम करते हो, लाइक पीडीएफ में अगर कर रहे हो तो वहां पे मार्कअप या ये सब होता है, तो वहां पर कितने सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि मार्कअप कहाँ प्लेस होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, वो सब मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ता है, एरिया के वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, पेज के वाइज कैलकुलेट करना होता है। तो तुमको हर हर एक फील्ड का नॉलेज ना हो चलेगा, पर मैथमेटिक्स डीएसए ये जरूरी है। और जब तुमको तुम्हारा प्रोजेक्ट आएगा तो थोड़ा बहुत साइंस या फिर फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, जैसे इन भाई ने बोला आर्ट्स ऑफ स्टार ने, हाँ फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। जब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आएगा तुम्हारे पास फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है तो तुम उस पर बिल्ड क्या कर लोगे। तो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई वो मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, साइंस नहीं चाहिए, ये सब कहाँ काम आएगा, ये काम आता है, बहुत काम आता है ब्रो। ये जो सिखाए हैं ना लोग, ये फालतू बकवास है, सबसे पहली बात कह रहा हूँ। तुमको अगर मिल रहा है मौका लर्न करने का, सीख लो, कोई भी फील्ड हो। अब नॉलेज लेना अच्छी बात है, नॉलेज ले लो, जहां से भी मिल रहा है ना नॉलेज ले लो, थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा ना चलेगा, तुम बाद में एक्सप्लोर कर पाओगे, थोड़ा वर्ड का भी पता होगा ना तो तुम कम से कम गूगल सर्च तो कर पाओगे। और यहाँ पर सबको सब कुछ नहीं पता होता, कोडिंग में भी मेरे को भी सब कुछ नहीं पता होता, मेरे को वर्ड खाली जानना है कि वर्ड क्या था, अगर वो वर्ड मेरे को पता है, मेरे को ये वर्ड पता है कि ये फील्ड में ये चीजें होती है, और मान लो फिजिक्स में ये कुछ एल्गोरिदम मतलब ये कुछ लॉज हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स के जो वेलोसिटी के नियम्स हैं, या फिर जो भी नियम्स हैं, फोर्स के नियम हैं, वो सब हम लोग को थ्री डी में अप्लाई करना है, तो हम लोग को वो पता होना चाहिए कि ये लॉ है कुछ, तो हम लोग भले ना वो सर्च कर लें बाद में कि क्या है एक्चुअल लॉ, अंदर क्या है वो लिखा हुआ क्या है, वो बात की बात है, पर हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो ना तो हम लोग वो तो तुरंत हम लोग सर्च कर पाएंगे आसानी से। तो वही बात है, तुम मैथमेटिक्स और डीएसए जरूरी है, पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी है, पर जॉब के लिए जरूरी है, जॉब प्लेसमेंट के लिए खाली जरूरी नहीं, प्लेसमेंट में तुम एक्सप्लेन कर पाओ ना बेटर तरीके से अपने आप को,
दिखा पाओ ना कि हाँ तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसका सॉल्यूशन ला सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ वो सबसे बेस्ट तुम्हारा होगा। और अगर तुम, हाँ, बिल्कुल इंटर्न हो, ये सब एकदम स्टार्टिंग में हो, तो कुछ प्रोजेक्ट बना लो। मैं तो कहूँगा प्रोजेक्ट बना लो और कंपनीज में अप्लाई करो और रिज्यूमे में वो प्रोजेक्ट डाल दो। अब प्रोजेक्ट को बेटर एक्सप्लेन करना होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट में क्या है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज हुआ है। कोई भी हो, वेब डेवलपमेंट में भी हो, तो तुमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है उसमें, प्रोजेक्ट में क्या है, क्या क्या यूज हो रहा है, कौन सा लाइब्रेरी यूज हो रहा है, और तुमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, कौन सी चीजें इम्प्लीमेंट की, ये जानना जरूरी है। या कंप्यूटर साइंस में सब कुछ जरूरी है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कभी कभी काम आता है तुमको। लगता होगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग को क्या काम, वो भी काफी काम आता है। कि तुम मशीन लर्निंग या एआई में भी जाते हो ना, तुम लाइब्रेरी यूज कर लोगे, सच कह रहा हूँ, लाइब्रेरी तुम यूज कर लोगे मैट्रिक्स का, जो भी होता है ट्रांसफॉर्म, ये जो भी जितने भी आते हैं टेंसर फ्लो में, काफी सारे उसके सॉल्यूशन आते हैं। सॉरी ब्रो, नॉइस अवॉइड करना, काफी नॉइस आ रहा है। सो मैं कहा था कि काफी सारे आते हैं लाइब्रेरी। पाइथन में ही काफी सारे टेंसर फ्लो के लाइब्रेरीज जो आती हैं, या फिर पाइटॉर्च की लाइब्रेरीज आती हैं। उसमें बैठे बिठाए तुमको फंक्शन मेथड्स मिल जाते हैं। पर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा ना, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस लिया हो और मैथमेटिक्स में ध्यान ज्यादा नहीं दिया होगा, या फिर काफी चीजें हम लोग ऐसे ही नहीं जाने देते कॉलेज में। मेरे को बहुत पछतावा आ रहा है, मैं सच बोलूं ना, मेरे को बहुत पछतावा आ रहा है कि मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि तुमको नहीं पता चलता कि वो मैट्रिक्स काम कैसे कर रहा है, वो अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, वो तुमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मोस्टली जो प्रोग्राम्स है ना पाइथन में, अ, ये क्या कहते हैं, पांडा लाइब्रेरी जो हो गया, जो हुई, ये ये सब का देखोगे ना, इंटरनली नमपाई जो है, तो उसमें इंटरनली एरे का ट्रांसफॉर्म ये सब होता है। इमेज, यहाँ तक कि इमेज का भी ट्रांसफॉर्म होता है, तब जाके तुम लोग इमेज को मैनिपुलेट करते हो। इमेज पे जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम रन करते हो, वो सब तुम उसी से करते हो, नंबर्स के थ्रू ही करते हो। पिक्सलेटेड फॉर्म जो होता है तुम्हारा इमेज का, उसी से करते हो ना। और उसको 0 1 में कन्वर्ट करके पूरा ट्रांसफॉर्म लगाते हो, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो अलग अलग कलर्स का। तो वो सब तुमको आना चाहिए, मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है अंदर। ये सब जो फालतू के बोलते हैं ना कि ये नहीं जरूरी है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, ये कहाँ काम आने वाला है। काम आने वाला है भाई, वो फालतू की बातें सुननी ही नहीं है किसी की, सच कहूँ तो सब कुछ काम आता है। हालत बिगड़ जाती है जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ आए और पता चले कि तुमको आता ही नहीं है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया था कभी। ये है। सिंपल चीजें देखो, तुम रियल वर्ल्ड में भी तुम सिंपल चीजें ही करने वाले हो। मेन प्रॉब्लम क्या आता है, तुम रियल वर्ल्ड में तुम लाइब्रेरी ये सब यूज कर लेते हो, पर और कोई कॉन्सेप्ट पूछता भी नहीं। मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं कि तुमको उनको सॉल्यूशन चाहिए, वो सॉल्यूशन ले लेंगी। पर तुमको जब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा ना, तब तुमको दिक्कत होगा कि ये असल काम कैसे कर रहा है। तुमको क्वेश्चन उठना जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई काम कैसे कर रहा है ये। मेरा खुद का बनाना है तो कैसे करूंगा। और मेरे को सबसे ज्यादा यही होता है कि मेरे को खुद का बनाना है, खुद का बनाना है, भले मेरे से वो ना, वो अलग बात है। मैं कर नहीं पाता एक्चुअली। मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, मैं पर कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। ये वाला चैलेंज इसलिए उठाया, और वो भी लाइव उठाया, ताकि मैं प्रॉपरली रोज कर पाऊँ।
नहीं तो मैं ये कब का छोड़ दिया होता ये चैलेंज। मैं लाइव इसीलिए कर रहा हूँ ताकि लाइव करने से क्या है, मेरे पे प्रेशर रह रहा है कि मैं कर लूंगा। लाइव कर रहा हूँ, मेरे को सब देख रहे हैं। सो या कस्टमाइजेशन में काफी क्लाइंट मांगते हैं, बहुत क्लाइंट मांगते हैं कि कस्टमाइजेबल होनी चाहिए, सब कुछ कस्टमाइजेबल होने चाहिए। उनको तो कई बार तो पूरा इंडिपेंडेंट उनको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ही यूज नहीं करनी होती कितनी बार, तो पूरा कोड तुमको लिखना होगा, तब तुमको पता चलेगा भाई मेरे को आता ही नहीं। ये प्रॉब्लम होता है और काफी लोगों के साथ होता है। सो तुमको कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया गया है ना, जितना चीज है वो सब तुमको आना चाहिए। रियली सीख लो, जो जो भी तुमको नॉलेज मिलता है ना कहीं भी, अ, ये चाहे वो टेक से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, कुछ भी, वो नॉलेज गेट कर लो। वो नॉलेज हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम है। सो नॉलेज कहीं से भी मिल रहा हो ले लो, उठा लो। तेल लेने जाए बाकी सर क्या कह रहे हैं। मैं कहा था, चलो काफी ज्ञान की बातें हो गई, छोड़ो, ज्यादा ही मैं डिप चला गया। अम्म, देखो ब्रो, मैं अभी भी, मेरे को काफी चीजें नहीं आती। मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ काफी चीजों में। मैं कोड कर लूंगा, मैं मेरे कोड दो ना, मैं कोड कर लूंगा। कोड एआई भी कर ले रहा है। और जब मैं देख रहा हूँ ना एआई भी कोड कर ले रहा है, तो तब मेरे को लग रहा है भाई खटक रहा है यहाँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग क्या कर रहा हूँ। मेरे को तो डीप नॉलेज भी नहीं है किसी की। तो मैं तो रिप्लेस हो जाऊंगा ना किसी चीज से। मेरे को सबसे ज्यादा डर इसी का है। मैं नई चीजें क्यों ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को जानना है, नॉलेज होना चाहिए यार, कुछ अलग डिफरेंट। कि हाँ कुछ मेरे पास है अलग, कम से कम कॉन्फिडेंस भी तो हो मेरे पे कि भाई मेरे मेरे को आता है। आई नो समथिंग दैट आई एम यूनिक। बिकॉज if if you don't know anything other than that simple stuff, then what is unique in you? That's a simple question. मेरे में भी क्या यूनिक है? मेरे में भी कुछ यूनिक नहीं है अभी भी। म- मुझे नहीं आता यूनिक चीजें। सो दैट्स, तुम सीखो भाई, कुछ भी नया सीखो, सिंपल मत सीखो। कुछ नया सीखो, यूनिक सीखो, यही सबसे बढ़िया है। और अभी का जो रेस चल रहा है ना, यूनिक का ही है। क्योंकि कोड है ना, सिंपल कोड एआई भी कर ले रहा है। हाँ देखो, एआई कोड एआई कर रहा है, वो टेम्पलेट जैसा ही कर रहा है, पर उसमें भी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। हम लोग काफी एआई यूज करते हैं कोडिंग में, जॉब पे भी, क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है फ्री का काफी। तो कोपायलट ये सब कंपनी ही प्रोवाइड करती है, तो हम लोग यूज करते हैं। पर ये रस्ट है, हाँ। तो हम लोग कोपायलट यूज करते हैं ना, काफी भूल करता है, काफी बार वो बौखला जाता है कि कोड क्या है। और काफी लेगेसी कोड में तो काफी प्रॉब्लम होता है उसको। तो वहां पर वो अभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर वो मान लो कोड कर देगा ना, तुम्हारा कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक हो ही जाएगा। सिंपल। वेब थ्री के हो मतलब क्या भाई? मैं वेब थ्री प्रॉपरली नहीं जानता। मेरे को पता है वेब थ्री एक टेक्नोलॉजी के बारे में, बट मैं उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं रखता। मैं सिर्फ ऊपर का नॉलेज रखा हूँ थोड़ा बहुत। जो ब्लॉकचेन वेब थ्री टेक्नोलॉजी का है, वो मेरे को थोड़ा बहुत ही पता है, मेरे को डीप में कुछ नहीं पता। सो आई डोंट नो। मैं सिर्फ रस्ट
मैं सीखने के लिए अभी सीख रहा हूँ, मेरे को सीखना है बस इसलिए। हाँ वही ना भाई। हाँ को ए पण एआई का फायदा कब होता है पता है तुमको? कि तुम कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, मान लो कुछ कर रहे हो, तो वो कभी कभी बता देता है कि भाई हाँ तुमने यहाँ पे गलती की है। मतलब हम लोग कोड हम लोग का होगा, हम लोग खाली रिव्यू के लिए पूछेंगे ना। तो तुम्हारा कभी कभी ध्यान नहीं गया होगा कि हम तुमने कुछ भूल कर दिया, मतलब छूट गया कुछ, कि तुमने क्लीन अप प्रॉपर नहीं किया, या फिर उसका जो इवेंट्स है वो क्लीन अप नहीं किया, भूल गए इन शॉर्ट। तो वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम है। पर पूरा का पूरा कोड लिखवाना उससे मत करवाना कभी भी भाई, वो भी लेगेसी कोड में। तुम बाद में खोजते रह जाओगी कि प्रॉब्लम क्या था। सो एआई का यूज थोड़ा बहुत चलेगा, कर लो। नॉलेज कभी कभी नॉलेज भी मिल जाता है, एआई से नॉलेज भी मिल जाता है कभी कोई तुमको पता ना हो ना कि ये लाइब्रेरी भी कोई लाइब्रेरी करके है, तुम यूज कर सकते हो, तुमको पता भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होगे। तब तुमको आइडिया लगेगा कि हाँ ये भी लाइब्रेरी हम लोग यूज कर सकते हैं, तुमको आइडिया लग जाता है उससे। उसके लिए भी एआई काफी सुटेबल है, बट नॉट फॉर अ फुल कोड। और अभी भी काफी हग रहा है ये एआई, काफी चीजों में हग रहा है। बट वही बात है कि अभी अभी ये हग रहा है, बाद में अगर मॉडल डेवलप होते हैं, इन इन लोगों के पास काफी पैसा है उड़ाने को। मॉडल ट्रेन करते जाएंगे, ट्रेन करते जाएंगे। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि उसको वो सब कुछ करेगा ही, तो तुम्हारे में यूनिक क्या रहेगा? वो है। सो ये ज्यादा दिन फील्ड में ज्यादा दिन रहना भी सही नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि अपना नॉलेज बेस अपडेट ना करो। नॉलेज बेस अपडेट करते रहो, नया नया कुछ सीखते रहो, वही सबसे बेटर है। नया सीखना मेन इम्पोर्टेंट है, भले तुम कुछ भी कर लो। मतलब स्टार्टिंग में तो तुमको है ना, देखो स्टार्टिंग में भले तुम ज्यादा नॉलेज मत गेन करो, तुमको जॉब करना हो तो भले ज्यादा मत नॉलेज गेन करो, तुम छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो। और तुम सब सिर्फ अगर के लिए तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, बस तुमको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया। अगर तुम एक्सप्लेन प्रॉपरली कर देते हो ना, तो मोस्टली तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना टेक्निकल में जाकर, ऐसा नहीं कि तुम किसी और का प्रोजेक्ट उठा लिए और तुमने खाली ऐसे ही देख लिया। मत करना ऐसा प्लीज। तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओ। भले तुम्हारे कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके अपना कुछ कर लो, बट अपना ही करना, मतलब किसी और का मत उठा लेना गिटहब से। तुम एक्सप्लेन कर लो ना, उसके बाद जॉब पे आ जाओ ना, उसके बाद तुम अपना लर्निंग बढ़ाते रहो। अच्छा अच्छा लर्न करते रहो, मतलब कुछ यूनिक करते रहो इन शॉर्ट। नाइस ब्रो। सीखो सीखो। हाँ, इट्स अ बेटर टू लर्न। हाँ वही है, कोड कोड फास्ट करने के लिए, या फिर तुम कोड रिव्यू भी करवा सकते हो, क्योंकि काफी बड़े बड़े कोड होंगे ना, तो कभी कभी भूल हो जाता है हम लोग से भी कि हम लोग भूल जाते हैं कि कहीं कुछ छूट रहा है, अ, या कोई मिस्टेक हो जा रहा है, तो वो बता देता है उस वो कि ये प्रॉब्लम है। सो हाँ, हम लोग जॉब पे भी यही करते हैं हम लोग। गूगल गूगल क्या, कोपायलट उन्होंने फ्री ही दिया है गिटहब। सो यूज करते हैं भाई, क्या करेंगे हम लोग। तो भी वो पूरा यूज नहीं होता, हम लोग को खींच चढ़ता है ये भाई यूज करने में उसको। कभी कभी हम लोग को सिंपल जो काफी लेंथी प्रोसेस होता है ना, जैसे कि 1000 फाइल में है ना, लैंग्वेज चेंज करना है,
स्पेसिफिकली कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो कभी कभी होता है कि चेंज करना होता है। तो हम लोग है ना उससे स्क्रिप्ट या ये सब बनवा लेते हैं और चेंज करवा देते हैं, ऐसा ही कुछ ऐसा। अम, या फिर है ना कोई छोटा सा फंक्शन रिफैक्टर करना है, या फिर छोटे मोटे काम हम लोग करवाते हैं। बट जो बड़ा टास्क होता है, जैसे कि तुमने अगर उसको बहुत बड़ा पूरा वर्क स्पेस दे दिया और क्या रिफैक्टर कर दो, वो नहीं करने वाला है, वो बौखला जाएगा भाई। या फिर तुम लेगेसी कोड का एक फाइल खाली दो ना, वो भी बौखला जाएगा कि इसका इंपोर्ट कहाँ से, क्योंकि हम लोग को भी उसको लेगेसी प्रोजेक्ट में क्या होता है पता है, कि उन लोगों का कोड कहाँ से आता है ना तुमको नहीं पता होता। क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट है ना जो जावा बैकएंड में है, और हम लोग एंगुलर में वर्क करते हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं तुमको पता ही नहीं होगी भाई कहाँ से आ रही है। मैंने माइक ही नहीं लगा रखा है ब्रो। ये लैपटॉप का डिफॉल्ट माइक है, मैंने माइक नहीं लगा रखा। आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो। मेरी वॉइस ही बकवास है वैसे भी। मैं आधी चीजें तो खा जाता हूँ बोलने के टाइम। बोलो, मैं तुम लोगों से बात करने के चक्कर में मैं हिंदी में स्विच हो गया पूरा। मैं कब से इंग्लिश में बड़बड़ा रहा था और हिंदी में स्विच हो गया। और मेरा कोड अभी वहीं के वहीं है अटका हुआ, मैंने आगे भी नहीं किया। बोलो। अ, मैं वापस से कोड पे कर जाता हूँ, नहीं तो ये कभी कंप्लीट नहीं होने वाला साला। मैं तुम चैट चैट में ही रह जाऊंगा हमेशा के लिए। अ, इतना सारा चैट मेरे को पहली बार आया है भाई, सच कहूँ तो। अ, एक मिनट, ये क्या फेल कैसे हुआ ये? इसमें क्या इश्यू था? एक मिनट, हाँ ये कि इसको कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये ये फाइल यहाँ पे सेट किया गया है, राइट? इको इन मैंगो ब्लूबेरी ये वाला इन्होंने किया है, ठीक है। और पाथ को एक्सपोर्ट भी किया है इन्होंने। तो हम लोग का ये काम करना चाहिए ना, ये क्यों नहीं कर रहा? हम्म, इसको ये फाइल नहीं मिल रहा एक्चुअली, इसीलिए ये एरर आ रहा है। ऐसे ही एरर नहीं आ रहा, ये इसको जो ये इन्होंने सेट किया ना ये फाइल सेटअप नहीं हुआ। बट क्यों नहीं हुआ वो मेरे को नहीं पता चल रहा। हम्म, एक मिनट, इससे पहले मैंने ये कोड क्राफ्टर वाला ये था, फिर नहीं ये वाला था ना। और इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने, हाँ, ये इसमें भी ऐसे ही किया था। और ये टेम्प बी एफ ये हर बार चेंज होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये पहले किया और उसमें ये वाले फाइल में बी एफ में बनाना ग्रेप डाल दिया। अ, एक काम करते हैं ना, ये वाला कमांड हम लोग एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं पहले, क्या होता है चलो देखते हैं। तेल लेने जाए हम लोग,
पहले कमांड ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, ये क्या हुआ वैसे? ओके ओके ओके, अंदर चला गया था। इको एन बनाना ट्री, और एक मिनट, ये वाला देख लो तो कहाँ गया? वेयर इज इट? yeah, here. Mango blueberry dot pear. Okay, mango blueberry dot pear. What? Okay, I don't know. This is not what we want. Let me. What we do is, let's execute one by one. Okay. Mm, let me. What? Just a minute. Let me join terminal. Okay, it's now fine. And what we do is, here, we let me give a minute. Okay, echo day, and 1 minute, echo and mango blueberry. Why it's not working? Mm, mm, are you guys know about it? I think I stuck here. Maybe. Maybe. Uh, just a minute. Echo and mango, blueberry, tempeh. Even though, if अगर वो सिंगल कोट और डबल कोट का प्रॉब्लम होता है तो भी, जस्ट मिनट, एक काम करते हैं ना, ये वाला जो है, हम लोग ये SRC ले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये, इस SRC को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं यार। सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक एक फाइल का नेम देना चाहिए, /f। ये वो फाइल क्रिएट कर देता है ना। व्हाट इफ अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फोल्डर भी क्रिएट कर देता है क्या? हम्म, नहीं, ये फोल्डर नहीं क्रिएट कर रहा है।
अकॉर्डिंग क्या बोल रहे? इफ यू कुड चेंज इट बट ठीक है आई थिंक वो डबल कोट में ही it tried it out but single quote में it used it as a variable according to postfix space. Like if you type echo dollar cell, it will show a cell path. But if you type echo, uh, yeah, just a minute. If you are saying right, then just a minute. Echo. मेरे को देखने दो, मेरे को खुद ही आइडिया नहीं है ये इसके बारे में, मैंने इतना ट्राई नहीं किया है। राइट, सिंगल कोट में मेरे लिए उल्टा है बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? सो क्या उस हिसाब से ये वाला हम लोग के कमांड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, हम लोग वाला ही कमांड एग्जीक्यूट कर रहा होगा ये, मे बी कर रहा भी हो। आई एम लिटरली कंफ्यूज ब्रो, सच कहूँ तो। हाँ, वो पोस्ट फिक्स वाला तो थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को, आधा चीजें भूल चुका हूँ मैं, काफी कॉलेज का काफी साल हो गया। आधे, बट आई थिंक यू आर राइट, बट अगर वो सही भी है तो बट इसको फाइल नहीं ना मिल रहा, हम लोग को प्रिंट नहीं कर रहा ये फाइल, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है कैट, और कैट में क्या हो रहा है कि ये वाला इसको फाइल नहीं मिल रहा। तो अगर तुम कह रहे हो कि ये वाला में प्रॉब्लम है तो मे बी हो सकता है। जस्ट अ मिनट, एक काम करते हैं ना, बट मैंने तो ये लॉजिक ही नहीं लिखा है। ये लॉजिक मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इसका मीनिंग ये हो गया कि हमको फाइल क्रिएट करना पड़ा अगर ये एग्जीक्यूट हम लोग के प्रोग्राम में हो रहा होगा। नहीं, बट ये टेस्टर के प्रोग्राम में रन हो रहा है, ये टेस्टर के प्रोग्राम में रन हो रहा है। तो मेरा सच में दिमाग नहीं काम कर रहा है। कैट में कंटेंट ही डिस्प्ले करना है, पर कैट है ना उसका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, कैट हम लोग का नहीं है। कैट में देखोगे ना, तो हम लोगों ने क्या किया है, क्या किया है, जो हम लोग का जो डिफॉल्ट कमांड है ना वही एग्जीक्यूट, कैट क्या है, टेम्प बिन और कैट में वो आता है, इस डायरेक्टरी में आता है टेम्प बिन, और यहाँ पे कैट एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए तो हम लोगों ने ये लिखा था ना, ये रहा एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, मैंने कहाँ किया था, ये रहा एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हो ना, अगर यहाँ से चेक करेगा कि कमांड एग्जिस्ट या नहीं, तो वो एग्जिस्ट करता होगा और इसको मिलता होगा तो हम लोग उसके हिसाब से कहते हैं और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो एग्जीक्यूट जो होने वाला है ना, तो वो
डिफॉल्ट वाला है हो रहा है मतलब। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा आर्ग्यूमेंट सही से ना जा रहा हो। आर्ग्यूमेंट सही से ना जा रहा हो, ये हो सकता है। अ, हाँ, वही फाइल क्रिएट नहीं हो रही है ना। फाइल क्रिएट नहीं हो रही है। तो फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए इसी से, कमांड से। फाइल से पहले रुको एक मिनट। ये कौन से फोल्डर में है? टेम्प बी एफ। टेम्प बी एफ में है, ठीक है। टेम्प बी एफ बी डब्ल्यू बी। तो इन्होंने ये पास तो दिया ही होगा, मोस्टली तो दिया ही होगा इन्होंने। एक्चुअल में पास एग्जिस्ट करता है क्या? एक मिनट, ये हाइपोथेटिकल है, पर आई थिंक ये होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। या सच ए फाइल डायरेक्टरी अवेलेबल। टेम्प में नहीं जा सकते लग रहा है। या फिर मेरे से कोई गलती हो रही है। हम्म, मैं कमांड कमांड क्या है यार? डायरेक्टरी होता है ना, सॉरी। डायरेक्टरी यहाँ तो पता है, इसका क्या था? लिनक्स का कमांड क्या था? एलएस था ना। आई थिंक एलएस ही होता है, बट कोई नहीं, छोड़ा। सीडी स्लेश स्लेश यूजर। मैं कुछ भूल गलती कर रहा हूँ यार, मैं सच कहूँ तो। पीडब्ल्यूडी ये तो होम कमांड हुआ ना। करंट डायरेक्टरी का पाथ। पीडब्ल्यूडी करंट डायरेक्टरी बताता है ना। करंट डायरेक्टरी एब्सोल्यूट पाथ के लिए तो हम लोग यही चीज करते थे यार, होम यूजर बीन कैट। वो पता है, चेंज डायरेक्टरी पता है मेरे को। खाली ये जानना है कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी जो आता था, एलएस से ही आता था ना। हाँ, एलएस से ही आना चाहिए, एलएस से ही आना चाहिए। हम्म, कोई ना। मैं इसको फाइंड कर लूंगा कोई कुछ भी तरीके से कि क्या प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं ना, पहले इनके डिस्कशन में जाते हैं कि डिस्कशन में इन्होंने क्या डिस्कस किया है। और यहाँ पे डिस्कशन है फोरम। और फोरम में क्या था मेरा प्रॉब्लम कि कैट में इश्यू आ रहा है। तो कैट में कौन से प्रोग्राम के लिए? सिंगल कोट्स के लिए आ रहा है। तो हम लोग सर्च करते हैं सिंगल कोट हो और कैट हो, क्या आ रहा है। ये वाला देखते हैं। यही इश्यू मेरे लिए भी है। in some cases
Say I was returning string. आई थिंक ब्रो तुम्हारा तुम्हारा ही सही है। तुमने जो कहा ना वो स्ट्रिंग वाला इश्यू, आई थिंक वही है, बट मेरे को अब डीबग करना पड़ेगा कि कहाँ एक्चुअली वो कहाँ से प्रॉब्लम दे रहा है। इसके हिसाब से भी आई थिंक वही प्रॉब्लम है। अगर सिंगल कोड का ही प्रॉब्लम है कुछ मेरे ख्याल से। और मैं स्ट्रिंग ही पास कर रहा हूँ ना, आई थिंक स्ट्रिंग ही पास कर रहा हूँ इसको पूरा तरह आर्ग्यूमेंट। बट नहीं, सॉरी, मेरे को लग रहा है नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है ये वाला कमांड में, एग्जीक्यूट प्रो कमांड में, ये वाले में। एक काम करते हैं ना इसको, हम लोग ले लेते हैं पहले, कैसे लेंगे कि अ, हम लोगों ने अभी क्रिएट किया ना फाइल, कौन सा किया था हम लोगों ने, यहाँ पे कहीं किया था, कहीं किया था। हम्म, ये वाला लेते हैं, ये वाला अभी के लिए लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है ना, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, कि आर्ग्यूमेंट्स क्या आ रहा है। मेरे को लगता है नहीं यहीं पर प्रॉब्लम है, तुम जो कह रहे हो ना वो स्ट्रिंग वाला, वही इश्यू में भी हो सकता है तुम जो कह रहे हो। अगर ये सही है ना तो मेरे को लग रहा है आर्ग्यूमेंट में ही गलती है मेरा। क्या गलती हो सकता है, एक मिनट, इन्होंने जो दिया है, अगर अगर तुमको जाना हो तो जा सकते हो, बहुत देर हो चुका है, 12:30 हो चुके हैं, सो जाओ, मेरे को भी सोना ही होगा अभी, सुबह जल्दी उठना है। सो आर्ग्यूमेंट, पहले आर्ग्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं ना, काम करते पहले आर्ग्यूमेंट प्रिंट करवा लेते हैं, और ये वाला हम लोग के लिए अभी के लिए रख देते हैं ऐसे, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर डूइंग दिस। वो आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट करने चाहिए में भी, एरर नहीं है ना कहीं। ब्रेक पॉइंट में यार, मैं वो प्रिंट वाला बंदा हूँ, मेरे को प्रिंट करना पसंद है, डिबग लगाना पसंद नहीं है। हाँ, डिबग यूज कर सकते हैं बट मजा ही नहीं आता यार डिबग का यूज करने में, और स्पेशली हम लोग को ये वाला टेस्ट केस रन करना होगा ना, तो यहाँ तो और नहीं होता काम। क्या कह रहा है ये, इको ये वाला हो गया, ठीक है। और हम लोग का ये रहा, सो या ये देख रहे हो ये वाला प्रॉब्लम करेगा। मैंने आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास किए हैं, ऐसे पूरा पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। अगर क्या होगा हम लोग पूरा का पूरा ऐसे स्प्लिट करने की जगह पूरा का पूरा पीछे वाला आर्ग्यूमेंट ही दे दे, तो क्या होगा अगर ऐसा करें तो।
एक मिनट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे ना। और आर्ग्यूमेंट्स, काम करते ये वाला देते हैं इसके बदले, हम लोग जो कर रहे हैं ना उसके बदले ये वाला हम लोग देते हैं। इसको कमेंट मारो, अथवा ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल भी कर देते हैं और यहाँ पे मैं वैसे भी अभी थोड़ी देर में स्ट्रीम एंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को सोना है और सुबह जल्दी जाना है। हम लोग एक्चुअली रूम रूम खोज रहे हैं, तो हम्म, कहाँ था एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम यार, यहाँ पे है ना। तो हम लोग इसको स्ट्रिंग बना देते हैं, इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। एक मिनट, हम लोग एक काम करेंगे, पहले इसको है ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यार कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये वाला हो गया। इसको हम लोग ऐसा करेंगे और ये स्ट्रिंग डन। और कहाँ गया आर आर कहाँ गया एग्जीक्यूटेबल वाला, मैंने कहाँ किया था, यही था सॉरी। इसको मैं वापस से ओपन करता हूँ और यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं इसको आगे कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं अब क्या होता है। मैं तुम्हारा सही था ब्रो, आई थिंक वही प्रॉब्लम है, सिंगल कोट डबल कोट वाला। अब नहीं होना चाहिए वो, मे बी देखते हैं होता है या नहीं। भाई पता है 600 व्यूज क्या है टोटल मेरा अभी। अम, ऐसे व्यूज बढ़ता है ना, लगता है भाई कुछ हो रहा है, बट मेरे को पता है ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कि बोर हो जाते हैं लोग मोस्टली। हाँ, अब मेरा कंटेंट कुछ हाई फाई है नहीं कि ब्रो ना हो, अब बोर ना हो। सो यहाँ पे क्या हुआ, line does not match expected value, received expected response। cat, वाह यार ये काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ। लेट मी प्रिंट अगेन, क्या हुआ एक्चुअली, ये देखना पड़ेगा मेरे को। काम क्यों नहीं किया बे, काम तो करना चाहिए, काम नहीं किया तो गड़बड़ है कुछ बहुत बड़ा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पहले कुछ काम तो कर रहा था, नोट फाउंड तो आ रहा था, अब तो वो भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अ, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये कुछ और प्रॉब्लम है, एक मिनट, आर्ग्यूमेंट प्रिंट कर लेते हैं ना अच्छे से। अ, इसको मैं कहता हूँ डी, और इसके कहता हूँ वाई वाई। ओके, डबल
है यार, सिंगल कोट में है तो एक आर्ग्यूमेंट होगा। फेस फेस आए तो टोकनाइज हो। मतलब सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हो तो एज अ आर्ग्यूमेंट गिनूं, और अगर वो ना हो तो स्पेस के बेसिस पे टेक टोकनाइज कर दूं, ऐसा। लिस्ट, फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू जाना। ओके, कोडिंग कैसे सीखूं ब्रो? वही सीख रहा हूँ मैं भी। बस यही करना है। तुमको बैठ के कोडिंग करना होगा तभी सीख पाओगे। मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं आता ये। और देखो, यही यही प्रॉब्लम होता है डीएसए ना करो तो। कुछ लॉजिक बिल्ड करना डीएसए सिखा देता है। तुम चैलेंजेस ये सब करते हो ना, तो लॉजिक बिल्ड करना सिखा देता है। नहीं तो मेरे जैसे हाल तो होता है कि तुम लॉजिक ठीक से बिल्ड नहीं कर पाते। ने जो कहा वो पहले देखते हैं हम लोग कि सिंगल कोट हो तो, और डबल कोट। हम्म, कहाँ पे था मेरा टोकनाइजेशन? एक मिनट। ये मैं थोड़ा बहुत ही समझ पाया हूँ एक्चुअली। अब मैं, बट जो कह रहा हूँ मैं ट्राई जरूर करूँगा अभी। बट मेरे को अभी सोना पड़ेगा, बहुत जरूरी है अब सोना। क्योंकि अगर मैं इन सब पर नहीं उठ पाया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ये एसएस ले लिया है। पता नहीं चैट रहेगा कि नहीं तब तक, पर मैं ये ट्राई करूँगा तुम्हारा। ये मैंने एसएस ले लिया है इसका भी। मैं ये यही ट्राई करके देखता हूँ तुम जो कह रहे हो। बट अभी के लिए बस होते हैं। गुड नाइट। तुम जॉब में हो या स्टूडेंट हो विक्रम? अगर जॉब पे हो तो बढ़िया भाई। अम, तुम्हारा चैनल बोलना ना। तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग सही है ब्रो, ऐसा कहूँ तो। बढ़िया, सही है। कोई नहीं, कर लो। लॉजिक बिल्डिंग सच में सही होना चाहिए यार, कॉन्फिडेंस आता है। मेरा अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है लॉजिक बिल्डिंग।
मैं कर लेता हूँ प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता है ऐसा, या नॉलेज नहीं है, और मैं सॉल्यूशन भी ला देता हूँ अपनी तरह से। बट बढ़िया गेमिंग में जाना है तुमको? बढ़िया रहेगा भाई गेम डेवलपमेंट में। तो उसमें काफी बढ़िया बढ़िया स्कोप है वो तो, बहुत नीश कह सकते हैं तुम वो। डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट काफी नीश है। ओके ओके ओके। ठीक है, कर सकते हो, कोई मुझे बात नहीं है। कोई नहीं, गुड नाइट अभी। ए, यार ये सही नहीं है भाई। तो तुम लोग सब कुछ का चीट करवाने लगोगे। ये उसके जैसा है कि सॉफ्टवेयर, तुम कहते हो कि अपने पापा को सॉफ्टवेयर डेवलप है, तो वो लोग कहते हैं कि कंप्यूटर रिपेयर कर देगा, कंप्यूटर रिपेयर करना आता ही होगा। ये क्या मतलब हुआ यार? कोई नहीं, गुड नाइट गाइस। फैटेलिटी, हाँ देखता हूँ क्या है ये, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या है ये फैटेलिटी चीट कोड। ओ, काउंटर स्ट्राइक का, काउंटर स्ट्राइक का करते, बढ़िया है। बट जो जीरो वोट ने कहा ना भाई, मेरे को हंसी आ रही है। अ, लोग कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मान लो वो फील्ड में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर से कंप्यूटर रिपेयर करवा लो। ये ये अलग बात हो जाता है भाई। ये सच में होता है भाई। अंकल लोग को लगता है ना कि हम लोग कंप्यूटर रिपेयर करते होंगे। हंसी आता है भाई कभी कभी, भाई क्या बोल रहे हैं भाई, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर करता हूँ अंकल, को कंप्यूटर रिपेयर नहीं करता। चलो कोई, हाँ, मैं कब से गुड नाइट बोल रहा हूँ, अभी तक गुड नाइट नहीं किया है। चलो बाय, एंड स्ट्रीम। गेम का चीट्स बनाता है ये तो ठीक है, पर सभी गेम का तो नहीं बनाएंगे ना भाई। सभी गेम का मतलब, मान लो मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड का हूँ एक्सपर्ट, तो ये नहीं है सब गेम का मैं बना लूंगा अभी। ये भाई बनाते हैं, चलो कोई नहीं। मैं एक्सप्लोर करूंगा, तुमने जो बोला ना ये वाला स्ट्रिंग वाला, एक तो ये कोडिंग के लिए तो ठीक है, ये वाला भी मैं चेक करूंगा, फैटेलिटी वाला। मेरे को जानना है क्या है। मेरे को मजा आता है भाई नई नई चीजें एक्सप्लोर करना। मैं काफी एक्सप्लोर करता हूँ, भले वो बाद में आता हो या ना होता हो, पर एक्सप्लोर कर लेता हूँ। मजा आता है मेरे को, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है मुझे। है तो, है बीजीएमआई, बढ़िया है, खेलो। ये तो रस्ट है ब्रो, और वो भी
मेरे को घंटा पता है कि रस्ट में कैसे काम चीजें करती है। मेरे को कुछ चीजें तो पता ही नहीं है कि कैसे काम करती हैं। तो भी मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के या ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के मैं ऐसा नहीं है एकदम पहली बार कर रहा हूँ रस्ट। मतलब थोड़ा बहुत मैंने सिंटेक्स पढ़ा है। मैं फ्री टाइम में है ना डॉक्स पढ़ता हूँ ऐसे ही। हाँ, तुमको अगर डॉक्स पढ़ना हो ना रस्ट का, तो दो रिसोर्सेस हैं। एक तो ये वाला तो है ही जो रस्ट बुक करके आता है। एक और है रस्ट का, गूगल का, गूगल कोर्स। ये लिखोगे ना तो यहाँ पे आएगा, ये रहा गूगल का। गूगल ने ऐसा बना रखा है पूरा, और इन्होंने तो टॉपिक वाइज बना रखा है, और एंड्रॉइड सिस्टम में रस्ट का कैसे यूज होगा ना उसका भी बता रखा। एंड्रॉइड का लिखा था कहीं, मैंने देखा था कि एंड्रॉइड के अंदर भी कैसे यूज हो रहा है, क्रोमियम के अंदर कैसे यूज हो रहा है, ये सब इन्होंने बता रखा है इनके में। और कितने दिन का सेशन है, रुको लगभग ये 4 दिन लिखा हुआ है, बट इन हावर्स इट इज वेरी लॉन्ग एक्चुअली। देखो ये रहा एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड में कहाँ यूज हो रहा है, क्रोमियम में कहाँ यूज हो रहा है, इन्होंने काफी कुछ लिखे बता रखे हैं। मेरे को ये पूरा पढ़ना है, मैंने तो थोड़ा बहुत ही, मैंने अभी नॉर्मल जो होती है ना वही पढ़ा है, जैसे कि नॉर्मल सिंटैक्स और कंट्रोल फ्लो, ये सब पढ़ा हुआ है। मैंने डीप में अभी नहीं गया हूँ, इनका काफी सारा चीजें हैं। और बहुत डिटेल में तो नहीं कह सकते, बट टॉपिक्स अच्छे दिए हैं इन्होंने। गूगल गूगल का ही है। सो गूगल ने इंटरनली एंड्रॉयड में और क्रोम में काफी जगह रस्ट यूज करने का स्टार्ट कर दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट भी काफी चीजों में रस्ट डाल रहा है, और उबंटू में भी रस्ट आ ही गया है, वो 26 वर्जन से शायद। उबंटू 26 में से रस्ट, कर्नल रस्ट में लिखा जाने चालू हो गया है। तो रस्ट काफी पॉपुलर हो रहा है। हाँ, वही तो नहीं समझ में आ रहा है, बोरो चेकर ही नहीं समझ में आ रहा है बहुत जल्दी। तो वो आ जाएगा, मैं जैसे जैसे कोड करूंगा ना आगे, मे भी मेरे को समझ में आ जाएगा ठीक से। कि ये अभी स्टार्टिंग ही है। मैं कितना दिन हुआ होगा मेरे को कोड करते, ये वही इसमें मुश्किल से 1 वीक हुआ है। 1 वीक भी नहीं, इससे भी कम हुआ होगा, पता नहीं। बट क्या ज्यादा दिन नहीं हुए मेरे को कोड किए, और मैं ज्यादा टाइम भी नहीं देता। आज 2-3 घंटे का स्ट्रीम चल रहा है। रोज 3 घंटे का होता भी नहीं, कभी कभी आधे घंटे का होता है, कभी 1 घंटे का होता है, जैसे टाइम मिले। वही है, टाइम मिलना चाहिए। क्योंकि तुम सुबह जो जॉब से आते हो ना, शाम को तुम थक जाते हो, तुमको कुछ करने का मौका नहीं मिलता, बोर हो जाते हो। भाई डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर इन द शॉर्ट, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। इसीलिए मैं ऑनलाइन लाइव ही कर रहा हूँ ना। मैं कोई फैंग या इसमें नहीं हूँ भाई, लोकल कंपनी है कोई, छोड़ो। ये ज्यादा डिटेल में मत जाओ भाई, कंपनी है छोड़ो। कंपनी मतलब लोकल नहीं है, सॉरी। कंपनी तो बाहर की इंटरनेशनल कंपनी है, पर ठीक है, छोड़ो ना उसको, जाने दो। ये सब डिटेल में ज्यादा नहीं जाना मेरे को। ब- बोरो चेकर, हाँ वो है बोरो चेकर का, पर आई थिंक सीख जाएंगे ना हम लोग यार। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने लाइव इसीलिए ना स्टार्ट किया है, ताकि मैं मेरे में ये रहे कि भाई मैं, मेरे को कोई देख रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरे को करना ही पड़ेगा ऐसा। मैं अब तक बैठ गया होता, मैं सच कहूँ ना, मैं 2-3 दिनों में करके बैठ गया होता, मेरे से नहीं होता ना, मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंचता। पता है, ये वाले में मैं अटक गया था। ये वाला था ना चैलेंज यहाँ पे,
ये इम्प्लीमेंट टाइप, इसके बाद लोकेट एग्जीक्यूटेबल वाला आया था ना, यही पे मैं फंस गया था। मेरे को लग रहा था कि मैं आगे कैसे जाऊंगा, पर लाइव में होते ही पता नहीं कैसे मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया कैसे भी, सिंगल कोट तक। सिंगल कोट वाला खत्म हो तो डबल कोट ये सब भी है, बहुत सारा है, बट पता नहीं वो कर पाऊंगा कि नहीं। हो जाएगा अगर मैं लाइव रोज करता हूँ। मेरे को चैट पे ध्यान मैं नहीं देना होगा, ये है। मैं चैट में ध्यान दे रहा हूँ ना, काफी बक बक चालू कर दे रहा हूँ। सो मेरे को ये इग्नोर करना पड़ेगा चैट काफी। हाँ वो तो मैं इसका पूरा डिटेल एक ब्लॉग देखना चाहूंगा, कि ब्लॉग कहीं हो ना, तो जो समझाता हो इजीली कि बोरो चेकर क्या है। थोड़ा बहुत तो मैं समझ गया हूँ, ये म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, या फिर जो हम लोग बोरो करते हैं वैल्यू, और इसका ड्रॉप कहाँ हो जाता है, वैल्यू ड्रॉप हो जाता है जो, ये सब थोड़ा बहुत तो समझ गया हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत चल जा रहा है। बट इसका एक डिटेल ब्लॉग पढ़ लूंगा ना, तो वो मेरे को शायद लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत तो जान लूंगा इसके बारे में, थोड़ा डिटेल नॉलेज तो हो ही जाएगा। नहीं ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो ही सही। बट चलो कोई नहीं अभी। गुड नाइट भाई, बहुत बहुत देर हो गया, बहुत बातचीत कर ली। मैं एंड करता हूँ स्ट्रीम। गुड नाइट।